Hello kids, this is Bharti Jaiswal going to teach you English grammar. In our previous classes, we have learnt noun, common noun, proper noun. Today we will discuss something more about noun. Noun as singular, noun as plural. In your earlier classes, you learnt many ones. So what were ones and many? One and singular both are same thing. Many and plural both are same thing. मीन्स वंस और मेनी जो आपने क्लास 2 या क्लास 1 में पढ़ा होगा उसी को अब हम सिंगुलर एंड प्लूरल बोलकर पढ़ेंगे. तो यू ऑलरेडी नो दैट नाउन्स कैन नेम वन और मोर पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स. तो a noun that names only one person, place, thing or animal is called a singular noun. जैसे book, park, table, bench, bush, bus, church, class, box. All are singular noun because all referring only one person, place, thing or animal. Again, a noun that names more than one person, place, things or animal is called a plural noun. जैसे कि books, parks, benches, bushes, buses, churches, glasses, boxes. So you can change most nouns from singular to plural by adding the letter s. आप क्या देख रहे हो? book में s ऐड कर दिया, it's a plural. park में s ऐड कर दिया, now it's a plural. But in all words we cannot add only s to make them plural. We add es to singular nouns that end with the letters s, single s, double s, ch and sh or x to make them plural. जैसे bench ends with ch, you have to add es to make it plural. Bush ends with sh, you have to add es to make it plural. Bus, single s, you have to add again es to make it plural. Buses. Church ends with ch, add es to make its plural. Churches. Glass, glasses. Box, boxes. So आपने देखा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ओनली एस ऐड करके आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, बट सब में नहीं कर सकते. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा द वर्ड्स एंड्स विथ ch, sh, सिंगल s, डबल s और x all are singular, but if we want to make them plural we have to add es. Now something more about noun. Means noun as masculine, noun as feminine, noun as common. You can say that masculine, feminine, common are gender. आपने हिंदी में लिंग पढ़ा है ना, लिंग मीन्स जेंडर. हिंदी में तो आपने सिर्फ 2 लिंग पढ़े, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, बट हियर वन मोर जेंडर, कॉमन जेंडर. Let's see what all these are. Nouns can be male or female. You already know that nouns may be male or may be female. So the nouns that refer to males are the nouns of masculine gender. जैसे boy, father, son. And nouns that refer to females are nouns of feminine gender. जैसे गर्ल, मदर, डॉटर. बट सम नाउन्स कैन रिफर टू बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स. सच नाउन्स आर कॉल्ड नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर. नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर डू नॉट टेल अस इफ द पर्सन इज मेल और फीमेल. जैसे हमने स्टूडेंट कहा तो मे बी बॉय और मे बी गर्ल. हमने पेरेंट कहा तो मे बी फादर और मे बी मदर. जैसे चाइल्ड मे बी सन, मे बी डॉटर. जैसे रिलेटिव तो मे बी अंकल, मे बी आंट. हियर स्टूडेंट, पेरेंट, चाइल्ड और रिलेटिव्स ऑल आर नाउन्स ऑफ कॉमन नाउन.
Boy, father, son, uncle, all are nouns of masculine gender, and girl, mother, daughter, all are nouns of feminine gender. So, I think you have learnt everything very clearly. So, that's all for today. Bye bye.